Okay, so visible to everyone? सारों को दिख रहा है? Yes. Yes, sir. Okay, okay, great. So हम बात कर रहे थे कोरियोनिक विलाई की. First of all, fetal membrane, we understand that 4 type of there and 3 are very, very crucial for our domestic animal. So second is chorionic villi. What is villi? Villi means spike-like projection over a structure or over a cell. Because the name is chorionic villi means there are spike-like or finger-like projection over the chorion. So how for any projection or for any such kind of structure, finger-like or cone-like or spike-like, you name it. Okay, so there should be one basic structure, core structure, and over it some other thing will be, because all the villi or all these projections, they are meant for any absorption kind of thing. Okay, आपने डाइजेशन में सुना होगा बहुत सारा विलाई और बहुत सारी चीजें. तो यहाँ पर भी so this chorionic villi is different from others. So first of all, it has the structure. The chorionic villi is consist of a cone. What is that cone? That is a mesenchymal vascular. Vascular means there will be blood supply to that. Okay, but it is a mesenchymal cone, a cone made up of mesenchymal cells. So mesenchymal cone, which is vascular in nature, and it is covered by cuboidal trophoblastic cells and giant binucleus cells. So if you do a postmortem kind of thing of this chorionic villi, so there is spike-like projection over the chorion. And what is that spike? It consists of a cone of mesenchymal cells, which is vascular in nature, and it is covered by 2 type of cells. First is cuboidal trophoblastic cell, and then second is giant binucleate cells. Okay, clear? So now, what is the function of this villi? As I said, all the villi, they have a function of, absorption. Now this villi, chorionic villi, it facilitates fetal and maternal exchange. Okay, especially blood supply, because you see this vascular, mesenchymal vascular, so it is designed for blood circulation. From where? Because mother is supplying blood to fetus, no? So the route of this blood supply is through chorionic villi. ओके, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा. फास्ट हम देख लेंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा इस चीज को. ओके, सो फर्स्ट इज डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा, मींस इंटायर एरेंटोकोरियन इज participating in formation of placenta. So you will see in swine and equine. Okay, so this is cotyledonary type of placenta. You see these are the placentomes. Okay, so there are 2 structures. First of all, these placentomes are dome shape, raised dome shape structures. Okay, and how these are meant? The placentomes are meant by 2 things: fetal cotyledon and maternal caruncle. Okay, so these 2 fuses and forms a raised platform which is called placentome, and therefore the cotyledonary placentation is the name given as cotyledonary placentation. You see, these are all placentomes only. Okay, now coming to the zonary placenta, look at this zone. This is again our case only. It is not from anywhere else or not from a book. It is just one dog was admitted to our TVCC, and it was aborting actually. So we collected this very structure just in order to show you all. So this is the zone. You see. Okay. So there is complete or incomplete band. Look at this band. Okay. So fetus is surrounded by. Look, this is fetus. Look carefully, this is fetus. Okay, and it is surrounded by a band. This is called zonary placenta. The zone, the band is surrounding the fetus, and from here only the fetus will get nutrition. That's why it is called zonary placenta. You'll see in carnivores, especially these pets, dog and cat, bear, elephant, seal, they have this zonary kind of
placenta. And then discoid means like a disc. You see this? So rodents and primates have discoid kind of placentation. Okay, so ग्लोसस क्लासिफिकेशन यू नो, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा. 3 layers are there, 3 fetal layer are there, endometrial layer, connective tissue layer and epithelium layer. मैटरनल में भी वही है, एंडोथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम. फीटल लेयर रिमेन्स नॉर्मल, अटैच रहती हैं, केवल मैटरनल लेयर कम ज्यादा हो सकती हैं. वो डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ मेनी मैटरनल लेयर आर रिमेनिंग. Based on that, there is a classification. We'll look up that classification. Okay, first is epitheliochorial, means all the maternal layer, endothelium, connective tissue and this epithelium, these all are intact. Okay, example equine and swine. Okay, synepitheliochorial, it is also epitheliochorial only, lekin synepitheliochorial means there is a syncytium formation. Syncytium means multinucleated cells will be there in that placenta. Okay, so this is typical feature of ruminant placentation. Then endotheliochorial means the endothelium and connective tissue will not be there. Chorion or fetal layer will directly in contact with uterine endothelium. That's why endotheliochorial. Okay, chorial means fetal. These fetal structures are intact, but it is in contact with endothelium. That's why endotheliochorial. That is example is canine and feline. Then hemochorial means there is no maternal layer. The fetal cells or fetal layers are directly exposed to the blood supply. Okay, blood pool से direct contact होता है fetal layers का, chorial layers का, and the example is rodents or human being. Okay, what are the function of placenta? सर कैसे सप्लाई होता है ब्लड का जब इसमें मैटरनल लेयर नहीं है? हेलो सर हीमोकोरियल में कैसे सप्लाई होता है ब्लड का जब ये लेयर ही नहीं है? ब्लड डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, ब्लड नहीं. आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोरियन जो जो कोरियोनिक विलाई है वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होती है. तो जितना भी न्यूट्रिशन है, जो भी गैसेस एक्सचेंज है, जितना अभी हम बता रहे हैं कि कैसे होता है, नेक्स्ट स्लाइड में यही सारा कुछ है कि ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे है सारा कुछ. ठीक है, सो कुछ में लेयर रिक्वायर्ड है, कुछ में लेयर रिक्वायर्ड ही नहीं है, सीधे ब्लड के पूल के साथ उसका कांटेक्ट है, सिंपल डिफ्यूजन से होगा. बहुत सारे हैं. आप नेक्स्ट स्लाइड एक बार देखो तो क्या है, एक्सचेंज होगा सबस्टेंस का फ्रॉम मदर टू दिस फीटस. सो 2 तरीके होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ लाइक अदर. ठीक, फिर तीसरा एक है गैसियस एक्सचेंज. ये तो सिंपल सबस्टेंस हुए. गैसेस एक्सचेंज होती हैं बिटवीन दीज टू डैम एंड फीटस. सो देयर इज काउंटर करंट मैकेनिज्म. ओके, सबसे ज्यादा इफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसफर इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म से होता है. ओके, काउंटर करंट मींस एक हाथ देना एक हाथ लेना, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं. ठीक है, सो द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी eliminated at the same time and at the same rate oxygen will be carried out, okay, towards the fetus. Okay, then multivillus, ये एक मॉडरेट टाइप का है. पूल में एक गैसेस एक्सचेंज होता है. and then concurrent. Okay, so this concurrent is least efficient because it is not parallel. Once the gas of one side is carried out to other, then only दूसरा वाला साइड. सपोज मदर डैम टू फीटस, सो फ्रॉम डैम टू फीटस सपोज एक गैसेस एक्सचेंज हुआ अगेन. अब एक बार कंप्लीट होने के बाद फीटस टू डैम. सो दिस इज हाउ दिस gaseous exchange takes place. Okay, then water exchange, more than 75% of water gets exchanged absorbed by the fetus. Okay, so आपको पता है कि इसमें अगर वाटर का एक्सचेंज कम हुआ तो डिहाइड्रेशन एंड देन प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन विल गेट derailed.
वो इतना important नहीं है, but most of the important material or nutrients are flown through this water. Okay, and especially excreta. आप देखिए ये जो जितने भी एक्सक्रीटा हुआ है ना, वो इस वाटर के थ्रू ही एलिमिनेट होता है. नाउ कमिंग टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, मैक्रो मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, सारा कुछ ट्रांसपोर्ट होगा. देन कुछ ट्रेस मिनरल्स लाइक कॉपर, वेरी इसेंशियल, that will get transported through placenta. And third is very important, that glucose and fructose is transported normally, लेकिन there will not be any transport of fat as such. Lipid transport नहीं होता as such. Only fatty acid and glycerol will be transported, and later it will be converted to fat cells. लेकिन as such fat का transport from mother to fetus नहीं होता. Certain hormones like gonadotropins and steroid hormones, they will get transported. Okay, then this metabolic waste product, मैंने बोला आपको ज़्यादातर metabolic waste products, they are carried out by the through water exchange. Okay, or it acts as a, now placenta itself act as a kidney. हमारी किडनी का जो फंक्शन है कि जितना भी वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारा कुछ, स्पेशली दिस urea and other things, basic materials, that will be carried out through urine. So यहाँ पर प्लेसेंटा एक किडनी की तरह काम करता है, और जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं that are expelled out from the body. Okay, डन. आज यहीं तक करेंगे, ठीक है. ये चीजें बाद में हम सुपरफिटेशन, सुपरफिकेंडेशन दूसरे क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे. ओके. यस सर. ओके, एनी डाउट? Okay, so we'll conclude our class right here.